Good morning, students. This is the second part of the first chapter, Evolution of Computers. And before this, we start with today's topic. Let us do the quick recap of the previous video, whatever we have learned in that. So, we have studied in the last video that the term computer is derived from the word compute, which means to calculate. Journey of calculating devices started from the first calculating device abacus that leads to the development of computer. सबसे पहला जो calculating device था वो कौन सा था? Abacus. Clear? So the abacus was the first mechanical device for calculation developed in चाइना. और मैकेनिकल डिवाइस था. मैकेनिकल मीन्स जिसको हाथ से करके काम चलाना पड़ता है. इट वॉज नॉट ऑटोमेटिक. ठीक है. इट यूजेज द मैनुअल लेबर. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल. इट वॉज नॉट ऑटोमेटिकल. Then it was used for addition, subtraction, multiplication and division, the basic mathematical calculations. Then Blaise Pascal invented an adding machine called Pascal's calculator or Pascaline, and Pascaline was capable of performing only addition and subtraction. We have also studied that Leibniz improved on Pascal's machine in 1671 and made a mechanical calculator. Leibniz ने पास्कल की मशीन, जिसको हम पास्कलिन बोलते हैं या पास्कल्स कैलकुलेटर बोलते हैं, उस पर और काम किया एंड ही मेड अ mechanical calculator. This calculator can do addition, subtraction, multiplication and division and can also find square roots of the numbers. Pascaline calculator जो था वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था. लेबनिज ने उसके ऊपर काम किया एंड वो जो उसने नया कैलकुलेटर बनाया उसमें ये चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो थे ही, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसके साथ साथ वो नंबर का स्क्वायर रूट भी करता था. स्क्वायर रूट means when I multiply the number with itself, it is called square root. Then Charles Babbage is considered as the father of computers. He invented a working model of mechanical computer called the difference engine in 1822 and the analytical engine in 1833. Then George Boole was the inventor of Boolean logic, and this is the basic principal logic for design the computer circuits nowadays also. That's why George Boole was considered as the main or the pioneer of the to design of the idea that gave a principal idea that he gave to design a computer circuit which we use nowadays also in making of computers. And Charles Babbage is considered as the father of computers. So now today we start with this till Boolean logic we have done. I think all you have now your book with you. So the next machine that was invented in the journey of computers, inventing of computer, was tabulating machine. Herman Hollerith, he was an American statistician and he invented this machine that is called tabulating machine. You can see the picture here. I have shown a picture. This is tabulating machine, and the white color cards which you can see on the board, these are the punch cards. It was capable of reading data, processing it and giving the desired output, जो आजकल हम अपने उसमें भी करते हैं, बट इतना सारा कुछ काम नहीं कर पाती थी ये जो tabulating machine थी. But it was, although it was capable of reading data, it can read little bit of data, it can process the data and also give the desired, means the output which the user wants. Then the input was given through punch cards. पंच कार्ड ऐसे ही होते हैं जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होता है, ऐसे ही पंच कार्ड्स होते हैं. क्लियर? सो वो पंच कार्ड जो होते हैं उसके थ्रू ये जो आप मशीन इसके ऊपर देख रहे हो, टेबल के ऊपर एक मशीन रखी है, उसके अंदर वो कार्ड्स रखा जाते थे एंड उसका लीवर प्रेस करते थे तो उससे जो भी नंबर प्रेस हो रहा है दैट वाज यूज एज अ इनपुट. द पंच कार्ड वाज यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन. और ये जो पंच कार्ड थे वो इनपुट देने के बाद में, प्रोसेस होने के बाद में, जब वो रिकॉर्ड को
स्टोर करने की बात आती थी तो वो पंच कार्ड पे उस पर वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा स्टोर करके रखा जाता था. दिस मशीन वॉज नोन एज tabulating machine. It was invented by Hermann Hollerith. Now the next machine is Mark 1. You can see the size of the machine in the picture. It is almost of a big hall. It is kept in a big hall or a room. And ये जो machine थी, Howard Aiken developed Mark 1 in 1944. It was capable of executing long calculations automatically. It was an automatic machine. अभी तक हमने बहुत सी machines पढ़ी, इससे पहले वो सब कैसी थी? Mechanical. The man has to work on it, then only it can give the output. But it was the first mechanical machine. Automatic machine, and Howard Aiken made this machine. He named it Mark 1, and it was invented in 1944, and it can do long calculations. You can see how many people are doing work on it, and it is a long machine. Very big machines were used at that time. Then the next machine was ENIAC. ENIAC, it was the first general purpose electronic digital computer. ये आम लोगों के काम आने वाला. जनरल पर्पस मीन्स पहले क्या होता था, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंप्यूटर्स जब पहले बनाए गए थे तो वो सिर्फ उसको इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यूज़ करते थे. पर ये ENIAC जो था, ये फर्स्ट ऐसा जनरल पर्पस मीन्स जिसको आम लोग भी यूज़ कर सकते हैं ईजीली. यू कैन सी the size of the computer, the people are working on it, and it was invented by John Mackley and J. Presper Eckert in 1946. It was 1,000 times faster than Mark 1. Mark 1 जो ऊपर है, ठीक है, इससे ENIAC 1000 times जल्दी काम करने वाला था. ENIAC की स्पीड Mark 1 से 1000 times faster थी. एंड ये दो नंबर्स को, कोई भी दो बड़े नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने की जो इसकी स्पीड थी वो 200 माइक्रोसेकेंड्स थी. 200 माइक्रोसेकेंड्स में ये कैलकुलेशन कर देता था. तो यू कैन सी इन दीज ग्रोथ्स and the improvements that were machines made every year. Scientists and different people used to work on those machines, and gradually they are near about to the computer which we see nowadays. So Mark 1, it was invented in 1944 by Howard Aiken. It can do long calculations. It was an automatic machine. Then after that ENIAC came, and it was invented in 1946 by two scientists, John Mackley and J. Presper Eckert. It works 1,000 times faster than Mark 1, and it could also add two large numbers in 200 microseconds. Clear? Now the next step of invention was EDSEC. EDSEC means Electronic Delay Storage Automated Calculator. The full form of EDSEC. Okay, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Please be with your book whenever you see the video. I think you all have purchased your books. Open your books with the video. It helps you more to understand the topic. So this EDSEC was designed by Sir Maurice Wilkes, and it was designed in May 6, 1949, and this computer ran the first graphical computer game, and that computer game was nicknamed as Baby. जो पहला कंप्यूटर गेम ग्राफिकल, आजकल आप लोग कंप्यूटर गेम के बहुत यूज टू हो, है ना. कितने तरीके के कंप्यूटर गेम्स हैं. Smartphones also you use to play these games. Okay, but it was the first computer game that was started in when EDSEC was in 1949 with the invention of EDSEC, and this computer game was named as Baby. Clear? Then the machine was invented was EDVEC. EDVEC means, the full form of EDVEC is Electronic Discrete Variable Automatic Computer.
तो वर्ड ऑटोमेटिक आ रहा है, दैट मीन्स दीज ऑल आर ऑटोमेटिक मशीन्स. ठीक है, यू हैव सीन आफ्टर ENIAC, from Mark 1, I should say, from Mark 1 the automatic machines were started. Mark 1, then ENIAC, then EDSEC, now EDVEC. It was also an automatic machine, and it was like a modern type of computer. और मॉडर्न टाइप ऑफ कंप्यूटर क्यों था ये आप पिक्चर में देख सकते हो. देखो ऊपर वाला नीचे वाला आपको ऐसा लग रहा होगा सिर्फ कलर डिफरेंस है, नहीं, थोड़ा बहुत सा फ़र्क था. इसका डिज़ाइन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था. एडसेक जो था वो सर मॉरिस विल्किस ने इसको डिज़ाइन किया था, एंड एडवेक जो था वो उन्हीं का ही था, इसी डिज़ाइन को लेके तैयार किया गया था. लेकिन बस इसमें एक छोटा सा चेंज था, एंड द चेंज वाज दैट जॉन वैन न्यूमैन स्टार्टेड स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी कोड. ये पहला ऐसा मशीन था जिसके अंदर बाइनरी इंस्ट्रक्शंस या बाइनरी फॉर्म के रूप में डेटा को स्टोर किया जाने लगा. बाइनरी मीन्स विच कंटेन्स 2 digits, दैट इज 0 and 1. That is also known as machine language. Yes, machine language or binary language which machine can understand. So EDVEC was the first modern type of computer in which John van Neumann started storing data and instructions in binary code. It was built in 1950 and was an improved version of ENIAC. ENIAC का ही ये improved version था. Okay. ENIAC में आपने पढ़ा था कि उसमें वो बहुत जल्दी काम करता है, एंड इट वाज द फर्स्ट जनरल टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल का मतलब यूजेस 0 and 1, उसी का ही एडवांस वर्जन था. इसका डिज़ाइन बहुत कुछ सर मॉरिस विल्किस के एडसेक से मिलता है, लेकिन इसमें चेंज ये था कि जॉन वैन न्यूमैन ने इसमें बाइनरी कोड्स यूज़ करके ही डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव करना, स्टोर करना स्टार्ट किया. Now, first computers were used by scientists and engineers. Then you saw that after some improvements, more inventions were there, and now the computer that people make were in around 1946, and so they were used as general purpose, not only by the scientists but by big companies and all. Then UNIVAC 1. UNIVAC means Universal ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इसका नाम ही यूनिवर्सल है. ठीक है, इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर. कमर्शियली अवेलेबल मीन्स अब इसको जैसे अभी तो इतना कमर्शियल तो नहीं था, अपन ये नहीं कह सकते कि जैसे आजकल हम लोगों के ऑलमोस्ट सबके घरों में आज कंप्यूटर होता है. डेस्कटॉप नहीं तो लैपटॉप होता है, और नहीं तो स्मार्टफोन्स वी ऑल हैव. दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ touch screen computer. But UNIVAC was the first commercially available computer, means it was started selling, and small companies also, rich people started taking this computer as their guest at home. So it was again the helpful device, because this was automatic computer. ठीक है, इट वॉज डिज़ाइंड बाय जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकली इन 1951. इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा. ये ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसमें न्यूमेरिक और टेक्स्ट मीन्स टाइपिंग भी कर सकते थे, और न्यूमेरिक के लिए तो कंप्यूटर फॉर नेचुरली कैलकुलेशन के लिए होता ही है. तो अभी तक जितनी मशीन्स हमने देखी थी उसमें या तो डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में ही, न्यूमेरिक डेटा ही था जिसको डिजिटल में कन्वर्ट करके और स्टोर किया गया. लेकिन ये यूनिवैक 1 ऐसा पहला कंप्यूटर था विच हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा. इट वाज आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज इक्विप्ड विद मैग्नेटिक टेप यूनिट. अब ये मैग्नेटिक टेप क्या होती है? आजकल हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने के लिए सीपीयू में क्या लगी होती है? हार्ड डिस्क. और हार्ड डिस्क जो होती है वो किसकी बनी होती है? अंदर जो हार्ड डिस्क होती है, वो जो ऊपर आपको दिखाई देता है, वो खाली क्या होता है? हार्ड डिस्क का बॉक्स होता है. हार्ड डिस्क अंदर से किस मटेरियल की बनी होती है? मैग्नेटिक टेप होती है. जैसे अगर आप एग्जाम्पल लो तो आपने किसी का एक्सरे की वो देखी है, उससे पतली होती है, ब्लैक कलर की होती है. ठीक है, तो वो मैग्नेटिक टेप जैसी होती है. क्लियर? तो वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है. सो यूनिवैक 1, द मेन फीचर्स वर
It was the first commercially available computer. Second thing is it was invented in 1951 by J. Presper Eckert and John Macleay. अगर आपको याद हो तो ENIAC was also invented by these two scientists in 1946. उसके बाद इन्होंने UNIVAC बनाया 1951 में, and that was a commercial success available digital computer. It was automatic. It was the first computer to handle both numeric and text data. It was also the first computer that was equipped with magnetic tape unit, जो आजकल हमारे हार्ड डिस्क में भी यूज़ होता है. That means it used to store more data and more easily. अब आप देख रहे हो मशीन का साइज छोटा होता जा रहा है, काम ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है. With this, we are now to the end of this lesson video, the second part. Okay, but before winding up, I want you to recall all the points that are important in this video. The first one is Hermann Hollerith invented tabulating machine. It was capable of reading data, processing it and giving the desired output. Then Howard Aiken developed Mark I in 1944. It was capable of executing long calculations automatically. आपको पिक्चर याद है? अपने सामने बुक खोल के रखिए. Open the book so that you can relate all the points with the diagrams and the pictures given in the book. It will help you to learn more. Then the next point is ENIAC was the first general purpose electronic digital computer invented by John Macleay and J. Presper Eckert in 1946. It was 1,000 times faster than Mark I. It could add two large numbers in 200 microseconds. Then the next machine was EDSEC. It was designed by Sir Maurice Wilkes, and this computer ran the first graphical computer game that was named as Baby. Then EDVEC. It was built in 1950. It was modern type of computer in which, and what is the difference in the EDSEC and EDVEC? And EDVEC, John Van Neumann started storing data and instructions in binary code. Binary means 0 and 1 language, that is also called digital data or binary language or machine language, a language that only machine can understand. Then the last one is UNIVAC 1. UNIVAC 1 was the first commercially available computer. It was the first computer to handle both numeric and text data. It was also the first computer that was equipped with magnetic tape unit and that helped to store more data easily. And with these changes, now UNIVAC has a smaller size than the previous machines. Okay, please refer the book. Referring the book help you to know more about these machines. Thank you students. Please go through both the videos and please do the written assignment also. Don't worry, I have left these topics of this chapter so that when you do the written work, I was waiting for your books actually, because this is a purely theory chapter and without the book it was very difficult for you people to understand what I am trying to say. Now you all have, I think you all have your books. Please go through both the videos, listen them carefully, view them carefully, give your feedback, and if you have any question you can ask me on my WhatsApp number. You all know well my WhatsApp number is 8302030500. Okay dear, good day.